Very good morning, dear friends. Myself, Dr. Vikrant Sudhakar Palekar. I am working as assistant professor in Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawahar, Palghar. Welcome on the topic classification and nomenclature of organic compounds. This is the third session we are doing on the IUPAC nomenclature. Till now, we have seen the basic rules and classification regarding the organic compounds. And also, in the last part, we have seen the basic rules about the nomenclature of alkane, alkenes, alkynes, and alicyclic hydrocarbons. So, in this particular topic, we are going to see the IUPAC nomenclature rules and examples of some of the compound for giving the IUPAC names for haloalkanes, alcohols, aldehydes, and ketones. So, let us see first the IUPAC nomenclature of haloalkanes. Haloalkanes. So basically these are the compound which are considered as the derivatives of alkanes. Derivative means these are the compound which are obtained or prepared from hydrocarbons such as alkanes by replacing one of the hydrogen by halogen group. This halogen group may be, let us say, fluorine, chlorine, bromine or iodine. So they are having the general formula Rx, where R is the alkyl groups and X may be the halogen such as fluorine, chlorine, bromine or iodine. So for giving the IUPAC nomenclature, these organic halides are named specifically by halogen. If your compound contain chlorine, then you have to use the word chloro. For bromine, bromo. For iodine, iodo. For fluorine, fluoro. So for giving name and nomenclature, we have to select a longest continuous chain which contains the halogen as a functionality. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करते टाइम हमें हेलोजन उस चेन में आना चाहिए, ये ख्याल रखना है. उसके बाद उसका जो नॉमेनक्लेचर है, जनरल नेम्स, वी हैव टू रिमेंबर एज हेलो अल्केन. मीन्स फॉर एग्जांपल हेलो is the halides and alkane is the maximum number of carbon which is present in the longest continuous chain. So let us see the example. So this is the example, first example, that is chloromethane. So in this particular chain, this is a single carbon compound, so it is only containing one carbon. So your parent will be methane. Okay, only one carbon, that's why the name is methane. And we have to use the prefix chloro because it is containing the halide as a chlorine. So it is also having the common name methyl chloride. Remember, this is a common name is methyl chloride, while IUPAC name is chloromethane. Then the second example. Now I will consider this particular whole molecule as in the part of the longest continuous chain. So there are two carbons, 1, 2. So parent will be ethane and it contain halogen. So that's why chloroethane will be the IUPAC name. While ethyl chloride, just like alkyl halide, so it is having the common name ethyl chloride. Then this is a compound which is having 3 chlorines. So what we will name 3 chlorine and only one carbon. So the name will be trichloromethane. So it is also popularly known as having the commercial name chloroform. So remember, chloroform is the compound which contains only one carbon and 3 chlorines. So it is having IUPAC name trichloromethane. Suppose if there are 2 chlorine groups and CH2 groups, then dichloromethane will be the name. Then this particular compound contains 2 halogens. Okay, so these 2 halogens are attached to the adjacent carbon atom. So we have to consider 1, 2 numbering from any one of the side doesn't matter because this is considered as a symmetrical compound. So what is the name? 1,2 dichloroethane, or it is also having the common name ethylene dichloride. 1,2 because the chlorine is attached at 1 number carbon and 2 number carbon. That's why 1,2 di because it is having 2 chlorines. So 1,2 dichloroethane. Next one. Now it is a branched alkyl halide. So it is having a halogen at position number 2. So this is our longest continuous chain. 1, 2, 3.
So when there is a substituent is present, then start numbering from that end so that the substituent should get minimum number. आपको ऐसे एंड से नंबरिंग चालू करने हैं जिसके कारण वो जो ब्रोमीन है या हेलोजन है जो प्रेजेंट रिंग के कार्बन्स में उसको कम से कम नंबर आना चाहिए. सो योर हेलोजन मस्ट कंटेन अ मिनिमम नंबर. ओके, सो 2-bromopropane. What will name? 2-bromopropane. If the bromine is present at this first number carbon, then what will name? 1-bromopropane. So remember. Then this particular structure we can see there are two halogens, chloro and bromo. So we have to apply rule number 4, alphabetical order. We have to follow the alphabetical order. There are two substituents, one is chloro and another is bromo. So who come first in the alphabetical order? Bromine. ब्रोमीन का नाम पहले आना चाहिए. सो नंबरिंग ये एंड से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 2-3 आता है, ये एंड से अगर करेंगे तो 3-4 आता है ये कार्बन्स को जहाँ पे हेलोजन अटैच है. सो व्हाट विल नेम? 2 पोजीशन को क्या है? ब्रोमीन. 3 पोजीशन को क्या है? क्लोरीन. सो 2-bromo 3-chloro and highest number of carbons is 5. So that's why name is pentane. Okay. Then cyclic haloalkanes. So when there is a cyclic haloalkanes is present, we have to use the prefix cyclo. Okay, cyclo, this particular prefix we have to use. Then this particular compound is the cyclic compound and it is a 5-member compound. So it is a CH here, CH2, 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 CH2. So what is the name? Chlorocyclopentane. If there is no chlorine, then we can call this particular compound as a cyclopentane. In the last session we have seen that nomenclature. But there is a halogen. So what is the name? Chlorocyclopentane. Next one. Try to give 2 substituents. One is chloro, another is methyl. So one number we have to consider for the halogen. आपको नंबर 1 यहाँ पे ही देना है. अगर आप एक नंबर यहाँ पे देते तो रॉन्ग नेम आएगा. So what is the name? 1-chloro, as chloro also come in the alphabetical order first, but it is this particular compound from the family of alkyl halides. So that's why it should get lowest number. So 1-chloro 4-methyl cyclohexane. 1-chloro 4-methyl cyclohexane. Numbering is must. Okay. So now we are going to move to next family, that is alcohols. Alcohols are again considered as a very important functionality, where these compounds were identified by the general formula ROH, hydroxy compounds. So these are this compound may be aliphatic, may be aromatic. If there is aliphatic compound is there, then they are called as a ROH. Then alcohols are named by adding suffix OL. Alcohols कंपाउंड को आपको सफिक्स क्या देना है? अल्कोहल्स का जो लास्ट लेटर आता है OL वो देना है. अल्केन्स का जो लास्ट लेटर है E, दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस्ड बाय द वर्ड OL. सो रिमेंबर, अल्कोहल्स आर वेरी इजीली आइडेंटिफाइड because they are being considered as a parent hydrocarbons because they are derivatives. The hydrogen is replaced from alkane by OH group. Okay. So that's why they are considered as a derived from hydrocarbons. So remember again, the last letter जो है alkane का E, we have to replace with the word OL. Last में आपको OL अगर दिखता है नाम में, तो you have to identify this compound must be from the family of alcohols. Okay. See the example. First compound containing only one carbon, methanol, or it is also called as a methyl alcohol. Last letter OL. So it can easily, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि E जो लेटर है मीथेन का वो रिप्लेस किया है कैसे? OL से. So what is the name? Methanol. 2 carbon and OH. इथेनॉल. सो नंबरिंग करते टाइम आपको जिस कार्बन को OH ग्रुप अटैच है उसको एक नंबर आना चाहिए, हमेशा याद रखने का. एक नंबर या कम से कम लोएस्ट नंबर आना चाहिए. अगर अल्कोहल अगर सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो वो टाइम पे रिमेंबर दिस पर्टिकुलर कार्बन शुड गेट 1 नंबर. यहाँ पे आप 1 दे देंगे, 2 यहाँ पे देंगे, नहीं चलेगा. ओके. सो 1 नंबर शुड बी गिवन टू दैट कार्बन वेयर देर इज अ डायरेक्टली अटैच्ड OH ग्रुप. इथेनॉल. Then this is a
secondary alcohol. Okay, so 2 position OH group. यहाँ पे नंबरिंग आप ऐसे साइड से करेंगे जिससे OH को कम से कम नंबर आए. So OH group should get lowest or minimum number. 2-propanol, it is a secondary alcohol. Alcohols are also primary, secondary, tertiary. So this is a compound having OH group at second carbon. So 2-butanol. नंबरिंग ऐसे एंड से करनी है जैसे उस जो जिस कार्बन को OH ग्रुप अटैच है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए. अगर आप नंबरिंग 1 2 3 4 यहाँ से करते तो नहीं चलेगा. So 2-butanol, secondary alcohol. Then try to give the name to this compound. This is the longest continuation. 1 2 3. So दो नंबर के कार्बन को दो ग्रुप अटैच है, एक मिथाइल और दूसरा OH. But this is a compound from alcohol family. So what will you name? 2-methyl 2-propanol. Remember, 2-methyl 2-propanol. This is a tertiary alcohol. Then cyclic alcohol. Cyclopentanol. 1 2 3 4 5. One more carbon. 1 2 3 4 5 6. So this is a alcohol having 6 carbon in the ring. Cyclohexanol. Okay. Last letter OL. Prefix कौन सा यूज करना है? Cyclo. When there is a cyclic compound, you have to use the prefix cyclo. Then if there are two OH group is there, just like alkenes we have seen. In case of the alkene, we have to use the word diene. So in the same way, we have to use here the word diol. If there are two OH group is present in between the same molecule, they may be attached to adjacent carbon atom, or they may be attached to the terminal carbon atom, or they may be present in the internal carbon atoms. But you have to use the word diol, specifying the number of that particular carbon where there is a OH group is attached. जहाँ पे OH ग्रुप अटैच है वो नंबर आपको स्पेसिफाई करने हैं. यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 और 1 2 भी चलेगा यहाँ से. सो 1 2 इथेन डायोल, 1 2 इथेन. व्हाई इथेन? बिकॉज देयर आर 2 कार्बन्स. नाउ ही दिस इज अ कंपाउंड. यू कैन सी देयर इज अ 3 OH ग्रुप, ट्रायोल. लास्ट वर्ड क्या आएगा? ट्राई. ट्राई मीन्स व्हाट? 3. All means alcohols. So 1 2 3 triol. Okay, 1 2 3 propane triol. Next family, aldehyde. As we know that aldehydes and ketones are the compound which is coming from the carbonyl compounds. These are called as the carbonyl compounds where there is a carbonyl group. Aldehydes का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, R C double bond O H. C डबल बॉन्ड OH, ये एलिफेटिक अल्डिहाइड है. अगर यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या आएगा? AR C डबल बॉन्ड OH. सो these aldehydes are having common name also and IUPAC name also. So remember, always while giving the numbering, we have to always give one number to this particular carbonyl carbon. Okay, एक नंबर हमेशा यहाँ पे आना चाहिए. Then next will be 2, or it is also called as alpha carbon. Next one will be 3, or it will also called as a beta. Next one will be 4, gamma. Next one will be 5 और डेल्टा. अल्फा भी बोल सकते हैं हम लोग या 2 भी बोल सकते हैं. अगर अल्फा कार्बन पे कोई सब्सटेंट है तो अल्फा हेलो अल्डिहाइड ऐसे नाम हो आ जाएगा उसका. या फिर अगर आपको IUPAC नेम देना है तो यह याद रखना 1 2 3 4. नंबरिंग मस्ट स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम द right hand carbon or right hand side. The carbonyl carbon should get always one number. अल्कोहल्स का जनरल नेम क्या आएगा? लास्ट लेटर जो है हमको E from alkane is replaced by the word Al. Al is the starting word of the aldehyde. Aldehyde. That's why Al is taken. So what is the general name? Alkanal. Okay. As we are moving forward and we are going through each and every organic compound, you have to use remember the prefixes and suffixes. Okay, so have an idea. Aldehyde, alkanal.
first aldehyde which contain only one carbon and left in between the carbon there is a hydrogens, so it is a only containing one carbon, one here. So methanol, it is also called as a formaldehyde. Then the next compound which is having two carbons, यहाँ पे numbering देते टाइम one यहाँ पे आएगा, two यहाँ पे आएगा, so it is a ethanol. It is also popularly being identified by commercial name acetaldehyde, formaldehyde, acetaldehyde. Then the branch compound 1 2 3, 2 नंबर कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, सो 2 मिथाइल इथेनॉल. ओके, नेक्स्ट वन 1 2 3 4, CH3 CH2 CH2 C double bond OH, 4 carbon से, that's why the name is butane. Replace last word E by Al, butanol. It is also called as a butyraldehyde. नेक्स्ट क्या नाम आएगा, देखो जरा बताओ, ऑलरेडी लिखा है नीचे, 3 मिथाइल पेंटेनल, 5 कार्बन्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमेशा 1 नंबर कार्बन यहाँ पे दिया है, 1 नंबर यहाँ पे दिया है, 1 नंबर यहाँ पे दिया है. 2 क्लोरो पेंटेनल, सेकेंड पोजिशन पे कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन, सो इट इज 2 क्लोरो पेंटेनल. इफ द सब्सटेंट इज प्रेजेंट यू हैव टू स्पेसिफाई द नंबर टू विच इट इज being attached, which particular carbon to which substituent is attached. 2 chloropentanol, already we have seen this particular name. Then cyclic aldehyde, so there is a cyclohexane ring and outside the cyclohexane ring there is a C double bond OH functionality. So this is a very unique and different nomenclature. Remember this particular structure, cyclohexane carbaldehyde. What is the name, cyclohexane carbaldehyde. Very exceptional nomenclature. Just remember cyclohexane carbaldehyde. Many times during the examination ask, many times student write it very wrongly. So remember what is the name, cyclohexane ring and outside the ring there is a CHO group, cyclohexane carbaldehyde. Then this is a cyclopentane ring. ऑलवेज नंबरिंग आपको यहाँ से करनी है, जिस कार्बन को कार्बोनिल ग्रुप अटैच है वहाँ पे नंबरिंग करनी है. अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्यों करना है, बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट मिनिमम नंबर. यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए. यहाँ से आप अगर करते हैं तो उसको नंबर आएगा 4, सो दैट इज नॉट अलाउड. सो साइक्लोपेंटेन कार्बोनडाइड, सो 3 मिथाइल देन साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड. अगर रिंग के बाद CHO ग्रुप है तो कार्बोल्डिहाइड बाहर, कार्बोल्डिहाइड बाहर. अगर 2 CHO ग्रुप है तो डायल, लास्ट नाम क्या आएगा, डायल. देयर आर 2 कार्बन्स 1 2, सो दैट्स व्हाई द पेरेंट नेम इज इथेन. रिप्लेस E बाय डायल. 1 2 3 4, क्या नाम आएगा, 1,4 ब्यूटेन डायल. वाई 1,4, बिकॉज 1 and 4 कार्बन इज कार्बोनिल कार्बन हैविंग CHO group. Benzaldehyde, this is aromatic aldehyde having general structure AR C double bond OH. Benzaldehyde, remember this particular structure, very important molecule, benzaldehyde. Then the next family, ketone. Ketones are again the carbonyl compounds having the general structure R C double bond OR. So this structure, these ketones can be aliphatic also, can be aromatic also, or they can be mixed also. Okay, simple ketones or crossed ketones also called as. The last letter suffix E must be replaced by on. The last letter from the ketone word ONE, one, on or one. So general name क्या आएगा, alkanone. अगर cyclic compound है तो you have to use the prefix cyclo. चलो सबसे पहला कीटोन कौन सा है, एसीटोन. व्हाट इज द नेम, CH3 C double bond O CH3. हाँ, तो नंबरिंग करते टाइम आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बोनिल कार्बन आता है. So 1 2 3, then start numbering from that end so that the carbonyl carbon should get minimum number. कार्बोनिल कार्बन को सबसे मिनिमम नंबर और लोवेस्ट नंबर आना चाहिए. ऐसे एंड से आपको नंबरिंग शुरुआत करनी है. उसके बाद अगर सब्स्टिट्यूएंट को ज़्यादा नंबर आता है तो आने दो. सो
this is the thing we have to remember while selecting a longest continuous chain. यहाँ पे देखो नंबरिंग कहाँ से की है, लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4. इफ आई डू द नंबरिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट 1 2 3, इसको 3 नंबर आता है. सो 2 इज मिनिमम और 3 इज मिनिमम, ऑफ कोर्स 2 इज मिनिमम. सो व्हाट इज द नेम, 2 ब्यूटेनोन, लास्ट लेटर ONE. आपको स्ट्रक्चर का नाम देखते ही पता चलना चाहिए कि ये कौन से फैमिली में प्रेजेंट है. अल है तो अल्डेहाइड, OL है तो अल्कोहल, ANE है तो अल्केन, अगर YNE है तो अल्काइंस. सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग्स. ट्राई टू मेक द टेबल एट योर होम एंड हैव दिस पर्टिकुलर नेम ऑफ द फैमिली एंड सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस. सो आते जाते आपको पता चल जाएगा कि ये कंपाउंड कौन से फैमिली में है. देन this is a very long structure, but don't get afraid. Try to find out simplest longest continuous chain. Longest continuous chain is total molecule. Okay, नंबरिंग कहाँ से करनी है, कार्बोनिल कार्बन को कम से कम नंबर आना चाहिए. सो नंबरिंग मस्ट बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, सो 5 मिथाइल. यहाँ पे देखो अगर मिथाइल को 5 नंबर आता है, यहाँ से अगर करते तो हम लोग यहाँ पे 2 आता और इसको कितना आता, 4 आता, तो चलता क्या, नहीं. सो the numbering must be done such a way that this particular carbon should get minimum number. या इसको कम से कम नंबर आना चाहिए. सब्स्टिट्यूएंट को भले ज़्यादा है, डोंट वेरी. सो व्हाट इज द नेम, 5 मिथाइल 3 हेक्सानोन. देन 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉन. 2 पोजीशन क्यों मेंशन किए हैं यहाँ पे, बिकॉज जो कार्बोनिल कार्बन है वो कौन से पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे. ये नंबरिंग अगर आप करते हैं तो सब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर हमको पता चल जाएंगे. देन इफ देर आर 2 कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कीटोन, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ डायओन. 2 कार्बोनिल्स, डायओन, डायअल, डायॉल. सो रिमेंबर देर इज इफ देर आर 2 numbers of the same group, then we have to use the word di. Then start numbering so that your carbonyl carbon should get minimum number. So there are 6 carbons, so it is hexane. Then 2, 5 dione. मतलब 2 और 5 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल. साइक्लोपेंटेनॉन, दिस इज 5 membered ring. 6 member ring, cyclohexanone. Then there are 2 functionality, aldehyde and alcohol together. So aldehyde should get minimum number. aldehyde को कम से कम नंबर आना चाहिए, ऐसे एंड से शुरुआत करने का. 1 2 3 4. सो 4 ऑक्सो, 4 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल, एंड 5 कार्बन्स. सो 4 ऑक्सो पेंटेनल. So this will be the IUPAC name to this particular compound. So hope so this particular compound will be sufficient. You can try to give the names by taking some another examples from books or some reference books also. So try to solve as many as problems you can, so that the practice will become very efficiently. Try to write the structure, then give the numbering either by pencil or either by pen. Select longest continuous chain, then the numbering either from left hand or right hand, then substituent should get minimum number. These are the basic rules we have to remember. So once these things are very clear to you, so this particular nomenclature part looks to be very simple. So thank you very much. See you in the next session with some another topic in the IUPAC nomenclature. Thank you.